तो आप सबका जो मणिपुर से चल करके आज यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं, उन सभी साथियों का, इंडिया ब्लॉक के हमारे सभी मणिपुर के राजनीतिक दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं का, और दिल्ली के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, छात्र नौजवान हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो मणिपुर के इस सवाल को अपना नैतिक समर्थन दे रहे हैं और मणिपुर के लोगों की न्याय की मुहिम में शामिल हैं, उन सबका भी हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से और एनएसवाई की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ खड़ा होकर के आपसे कोई औपचारिक बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मणिपुर का सवाल हमारे लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है। ये हमारे नेशन की आइडेंटिटी, उसका वजूद और न्याय की जो हमारी संकल्पना है कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे जुड़ा हुआ मसला है। अपने आप में ये कितनी अजीब बात है कि जो लोग दिल्ली में शासन चला रहे हैं, हमारे देश की जो केंद्र सरकार है, वो पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं। मैं केंद्र सरकार कह रहा हूं, हालांकि आजकल केंद्र सरकार को मोदी सरकार कहा जा रहा है। मोदी जी पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, पूरे देश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कहीं अगर किसी बिजली के खंभे का भी उद्घाटन करना हो तो प्रधानमंत्री चले जाते हैं, बस वहां फोटो खिंचवाने का अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे हैं। क्या पता उनका जो गूगल मैप है वो मणिपुर का रूट नहीं दिखा पा रहा है। क्या पता कि शायद वो ये भूल गए हैं कि मणिपुर भी भारत का ही एक हिस्सा है, भारत का ही एक राज्य है। और एक दिन की बात नहीं है कि कोई एक घटना हो गई, कोई एक वायलेंस की वारदात हो गई और मामला खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। लगातार कई महीनों से हिंसा, बलात्कार, लोगों का घर जलाया जाना, रोजी रोजगार का छिन जाना, पूरा का पूरा शासन प्रशासन ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने स्टैचू बोल दिया हो। इतनी दर्दनाक बात है, लेकिन देश की सरकार के मन में मणिपुर के लोगों के लिए ना कोई संवेदना बची है और ना ही जो है उनके दिल में थोड़ा सा भी दर्द है कि हमारे देश के एक हिस्से में लोगों की हत्या हो रही है, लोगों का घर जलाया जा रहा है, लोगों की पढ़ाई लिखाई रुक गई है, स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं, शासन प्रशासन का एक विभाजन हो गया है। एक राज्य के लोग आपस में विभाजित कर दिए गए हैं और देश की सरकार चुप है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो न्याय का सवाल है। वहां के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ हमारी पार्टी, हमारे नेता कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे दोनों ही, और हमारी पूरी पार्टी, हमारे तमाम सांसद, हमारा तमाम जन संगठन, जब से मणिपुर की घटना हुई है लगातार हम लोग इस सवाल पे बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री का गूगल मैप भले काम नहीं कर रहा हो सकता है उनको मणिपुर का रूट नहीं मिल रहा हो, डिजिटल इंडिया के इस दौर में हो सकता है कि उनका इंटरनेट वहां की हालत नहीं इनको बता पा रहा हो, लेकिन न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग वहां जा रहे हैं, बल्कि वहां के जो शिविर हैं, जिनको अपना घर छोड़ना पड़ा, जिनका घर जला दिया गया, उनके बीच में काम कर रहे हैं। और देश की संसद में लगातार इस बात को हम लोग उठा रहे हैं कि सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और मणिपुर में जो इतना बड़ा खाई बनाई गई है, जो लोगों को बीच में
नफरत फैला करके लोगों को आपस में दूर किया गया है, इसका एक हल निकालना पड़ेगा। और मैं आप सबसे, मणिपुर के लोगों से ये निवेदन करता हूँ, कितनी भी कोशिश कर लें, हमारे शब्द शायद उस घाव पर मरहम का काम नहीं कर पाए, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हम आपसी भाईचारे का, शांति का, मोहब्बत का, आपस में मेल जोल का रास्ता अख्तियार करें और जो लोगों के साथ अन्याय हुआ है वहाँ पर न्याय सुनिश्चित करें। और मुझे उम्मीद है कि अगर सरकार यह बात नहीं सुन रही है तो लोकतंत्र में, जमहूरियत में लोगों को जन आंदोलन के बदौलत, और उसी का यह नतीजा है कि आप सब लोग आज दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। जब सरकार अपनी बात नहीं सुन रही है तो उनको डेमोक्रेटिक तरीके से सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चल करके अपनी आवाज़ सुनाई जाए, उनको बताया जाए। और इंडिया ब्लॉक के जो तमाम दल हैं वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से और अपने फ्रंटल NSY की तरफ से आपको आश्वस्त करते हैं कि मणिपुर के न्याय की इस लड़ाई में हम मणिपुर के साथ हैं, इस नारे के साथ हैं कि मणिपुर को बचा करके ही इंडिया को बचाया जा सकता है। इस उम्मीद के साथ हैं कि सत्य में ताकत होती है। अन्याय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अन्याय का बादल चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, न्याय के सूरज को निकलने से नहीं रोका जा सकता है। मणिपुर में फिर से शांति होगी, लोगों में एकता और भाईचारा होगा और अन्याय के घावों को भर करके न्याय का मलहम जरूर लगाया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपने मीडिया और तमाम जो हमारे मीडिया के साथी हैं, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, डिजिटल, सभी साथियों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। And I must say that today he has repeated some of the most essential points that explain why I am here in response to his invitation. As he admits at short notice, I have kept some people waiting in my office to come and see you all and express my solidarity with the people of Manipur. I'm honored to be sitting next to your distinguished former Chief Minister, Mr. Ogrami Ibobi Singh. We have former PCC Chief Girish Shodanka here. There's so many senior people here. The Mahila Congress has come. We are all here to show our support and solidarity for the people of Manipur in this moment of distress. It's not just a moment, it's a long time. 3rd of May 2023 is when the violence started. I remember speaking about it outside Parliament to our friends from the media when we had the monsoon session, saying, why is the government silent? So many people have been displaced. Over 60,000 people are sitting in refugee camps in their own country. It's an unacceptable privation. And by the way, those camps are very badly run. People are in great distress. I have received delegations from Manipur telling me how bad the conditions are in which people are living in those camps. On top of that, what are we seeing in Manipur today? A continuation of violence. I wrote an article for the global media about the situation in August of last year. At that time, the figure was under 150 people killed. Today, a year and 3 months later, it is up to 258 people killed. And yet the government is completely oblivious to what is happening. Our Prime Minister has not seen fit to go to his own country, to go to a vital part of our own national security and express his pain at the loss of the lives in Manipur. He has gone to Ukraine and wept about the Ukrainian children there. He has gone to Russia and talked about the needless deaths in war. It's high time he went to Manipur and talked about the unnecessary deaths of our own Indian citizens in a needless and unnecessary conflict that the government should have been able to stop a year ago, a year and a half ago, but it's been continuing now for a year and 7 months. We are looking at a situation
when in our own country people's homes have been destroyed, churches and temples have been attacked. A minister of the BJP government had his own home burned down just last year. And yet, the government has the gall to speak about normality, to speak as if nothing has gone wrong, that everything is calm and peaceful. How can they even have the face to acknowledge that their own chief minister has been unable to win the confidence of all people in his state? We're looking at a time when he, for the first time, tried to call his own party MLAs together, and his own party's MLAs from one part of the state refused to talk to him. This is not a good sign. What we are seeing is a state that has been misgoverned to the extent that even us who are committed to democracy in this country were forced to say president's rule would be better than this kind of misrule. We have talked about in all these placards you are seeing before you, we've talked about the importance of upholding the Constitution of India. When people die in Manipur, it diminishes every one of us Indians. Every one of us is hurt and affected when one of our brothers and sisters in Manipur is assaulted, is stripped, is raped, is thrown out of their homes, is forced to take shelter in a refugee camp and to go elsewhere. I have spent last Christmas with some Manipuri children who could not study in their state. And because they could not study, some states in the south of India offered them places. My own state of Kerala is very proud to do that. And they have then come saying we can't go home for the holidays. I was very happy to have a Christmas lunch with them and talk to them about the distress and pain they're enduring. All of you in different parts of Manipur are the same to us. We don't draw any distinctions based on all these identities. The most important identity is that you are all Indian. And as Indians, it is your duty. It is our duty to make you feel safe and your duty to uphold the constitutional values that we build our country and our democracy on. Let me say to you all that we stand with you in this hour of suffering. We don't want to see your homes destroyed, we want to see them rebuilt. We don't want to see people living in refugee camps, we want them to feel safe and secure again. We don't want the government to act as if nothing is wrong, we want the government to face up to their responsibilities. We want the Prime Minister to go to the people of Manipur. We want him to express the shock and pain and horror that he has expressed for so many other victims of conflict elsewhere in the world. We want him to say to the people of Manipur, we feel your pain and that we want you to live in peace. Manipur has been reduced to a garrison state. The AFSPA is in force and yet people keep dying. We have seen weapons that were issued to the police and the paramilitary falling into the hands of lawless elements. We have seen people flouting the law of the land. Stories of everything from drug smuggling. As you remember, a famous Manipuri police officer resigned from the police in order to protest the government's collusion in actions of drug smuggling, which are also damaging Manipuri society. This is dysfunctional misgovernance in a vital state of India. Professor Bimal was right to say, is it a case of out of sight, out of mind? Is Manipur too far from Delhi for the government to care about it? Or is it important for us to say, wherever you are in India, you belong with us, we belong with you, and we will try and do our best to keep you safe. This rally today is an action of solidarity with all of you because we feel your pain. And this action is to say to all of you, we are sorry you have suffered so much. Our government should be sorry they've allowed you to suffer so much. And we demand that our government should come and take the necessary steps to restore peace and tranquility and normal life for all of you in Manipur. मैं आपसे हिंदी में कोशिश नहीं किया बोलने को क्योंकि अभी कन्हैया भी आए हैं, वो अच्छी तरह आपको समझाएंगे कि हमारे देश में
चीजें कैसे चलनी है। और मणिपुर का दुख हमारे दिल में भी है। ये तो मैं अंग्रेजी में आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन आप हिंदी में भी सुनिए। मैं सिर्फ आपसे ये भी कहूंगा, दिल्ली इतनी दूर नहीं है मणिपुर से। जो कुछ मणिपुर में हुआ है 1 साल और 7 महीने से, ये यहाँ भी हमें महसूस हुआ है। वी आर हियर बिकॉज इंडिया मैटर्स। Manipur is vital to India's future and to its security. Let us stand with the people of Manipur. Jai Hind! You know, especially for people from my state, it is okay. But this meeting is essentially for people in this country. You know, we have been shouting, we have been giving memorandum and meeting the representative of the union government, like the governor. But, and I, as a representative from my home state, I've been speaking to media and public meetings and so on. But I must share with you, my fellow citizens from the rest of the country outside the so-called India's Northeast. And I must tell you something today, that I consistently use a possessive pronoun expression. I don't say Northeast India. I always say India's Northeast. Northeast is like a property possessed by the post-colonial Indian state. And I'm waiting for a day where I would have a comfort in using the word Northeast India rather than India's Northeast. But what has happened, or rather happening since the last 17 or 19 months, constantly made me feel and ask this question, which I've been asking as a student in 1980s when I came out of my home state. As a graduate student in Pune, I was asking this question in the 80s. What is the place of Manipur or India's Northeast in the scheme of things in this great country? I'm pretty aware of the impact of pan-Indian nationalism in my state right from the beginning of the 20th century. The poetry that I have read, which was written in the early part of the 20th century, to people even celebrating Manipur's merger with the Indian Union. All those people who fought as a part of the INA and the Subhash Chandra, or the fact that the generation in the 40s and the 50s, Subhash is a very popular name in Manipur, inspired by that national leader. Jawahar is also a very popular name among many of them. Despite that kind of an affiliation, the Northeast has always been looked upon with suspicion and constantly questioning. I have said this as a academic, speaking in many platforms in this country, including capital city, both in seminars and public meeting, that this suspicion is so endemic in this country. And I have said, some people say, you know, Manipur's issue has not been taken care of. This is not the first instance. There have been instances before. And I said this in a paper I wrote some 25 years ago. I said, people say it's a tyranny of distance. And therefore, it is a question of out of sight, out of mind. मैं बोलता हूँ, ये issue नहीं है. हकीकत में क्या है? Is the question of out of mind, therefore out of sight. This is 25 years ago I wrote राष्ट्र चेतना. उसी का एक हिस्सा नहीं मानता, तो आपके सामने होकर भी वो देखेगा नहीं, आप register करोगे नहीं. Since it is out of the mind of the Indian consciousness, even if it is in front of you happening, your mind will not register.
I have taught students from Kerala to Kashmir, from Gujarat to Nagaland. I have my students who are senior faculty members in various universities and colleges across the country and abroad. And the feeling that I had as a young graduate student in the 80s, to the kind of articulations that I have done as a faculty in the last 30 years, all have come back again with this incident, the manner in which the government of India has looked upon the crisis in Manipur. I thought that things will change one day. The things haven't changed. That's a very bad feeling that I have, sitting inside the temple of democracy, the largest democracy in the world. As a member of parliament, as I said, I often ask myself silently, do these fellow members feel the way I feel? The way I feel about my home state and its place in this great country? Like scores of students, right from my time, for that matter even in my father's time, when he came out for studies in the late 50s and early 60s, in the so-called mainstream. The kind of experiences they have gone through, which was registered in a memoir of a well-known singer, a very, very popular figure in Manipur, Pahari. Nongaitem Pahari, who is also called the Melody King of Manipur, who happened to be again the founding member of the first liberation organization in 1964 because of what he had gone through outside Manipur. The kind of humiliation, kind of invisibility that Manipur was in the 50s and 60s. It's not surprising that I know I saw the same thing, the same experience in the 80s as a student. I've told many of my students these stories. And now that I am also a member of this parliament, and the manner in which the issue of Manipur has been looked upon often made me feel that this country hasn't changed much. So I will continue to use this expression called India's Northeast rather than Northeast India. This government, which is supposed to be driven by a nationalism, it is the kind of nationalism that I was trying to remind them in my maiden speech in Parliament. The manner in this nationalist ethos have looked upon Manipur is absolutely unacceptable. देश के बारे में कुछ बोलता है, बोलते कुछ और करते कुछ. That's the feeling. If you are a nationalist, you will not behave the way you have behaved vis-a-vis with the crisis in Manipur. Take this. The 70,000 people, almost, have lost their homes. Villages in hundreds have been wiped out. Hundreds have been killed, women and children assaulted. And in the recent time, what you have seen, that the crisis has taken a very dangerous and ugly turn with hostage-taking instances. People have been taken hostage, like what happened in Gaza and so on. And those hostages were slaughtered after their pictures were put up on social media. And that cold-blooded killing after taking people into hostage include even young infants, 8 months old. And right now as I speak, there is one man called Laisham Kamal Babu, who is a worker of a construction company working inside, supposed to be the most secure space in Manipur, the headquarters of the 57 Mountain Division, or also called the Red Shield Division of the Indian Army. He disappeared without any trace with his two-wheelers. And I've written this on my Twitter, appealing to Rajnath ji and others. And no word came.
a man disappeared from within the army's cantonment. Generals don't bother, the defense minister don't bother, and we are entering around about 12 days now. And people begin to expect the worst in this case as well. So please remember, ये बाहर में नहीं हुआ, ये एक मिलिट्री का कंपाउंड से हुआ है. Is the headquarter of one of the largest staff enlistment in Manipur, military deployment, 57 mountain division. खुद का कैंपस से गायब हो गए, अभी तक ट्रेस नहीं कर पाए. फिर भी डिफेंस मिनिस्टर कुछ बोलते नहीं, आर्मी चीफ को कुछ बोलना नहीं. 3 corps under which the 757 mountain division operates don't speak. So then the Manipuris and generally people from the northeast, India's northeast, become something like children of the lesser God. That's the kind of a situation, and I'm sharing this as a member of parliament of the largest democracy in the world. I keep on thinking this inside the house as I attend the session. What should I do? Every day, of course, there are rules and regulations, so I keep on sending for 0 hours and so on. It's done through a lottery system. Thankfully, some of my party members have moved adjournment motion. It is obviously denied again by the government. They don't want to discuss Manipur. I'm hoping that before the end of this session, just as we protest against the Adani every day, I am just desperately hoping that one day my party and other rest of the MPs will do a protest in front of the parliament on Manipur issue, even if they refuse to discuss it on the floor of the House. I am desperately hoping, and Sashiji is here, my colleague. I'm sure that we will put in this word as well as we move. My party members have come here, our MPs. This is little that we can do for this government who doesn't seem to hear anything. Before I wind up, let me put things on straight. Today's protest, one must think very clearly. Our society has been divided, and this BJP is used to doing these policies. They thrive on polarization in society. They always do that. And the Manipur society is deeply polarized, is something that we must understand is a byproduct of politics. Second part, please remember that a great country like India, I've spoken before I fought election in this spot as a part of the civil society groups, 2023, May, June. This is a very familiar space for me. In fact, the entire Jantar Mantar, since my student days, this is where we used to do protests, or the Parliament Street. Like most Manipuri students who are a little active, I was also detained in this Parliament Police quite often during those days. And this spot, I have reminded this, and I'm reminding as an MP again. India, militarily speaking, is the 4th most powerful state in the world in terms of its military strength and power. It is the 5th largest economy in the world. Manipur population is barely 3 million. Expected to be around 33 right now, 33, 34 lakhs. As much as the population of New Delhi's district. In such a small, you have 2 divisions of army, and 60,000 people, security personnel, were sent in the very next day after the violence erupted on 3rd of May 2023. On the 4th and the 5th of the same month, more than 60,000 people, security personnel, were sent in. And recently they have done it again. And there are notorious laws like Armed Forces Special Power Act, which give extraordinary power to the security personnel.
despite the presence of these 70,000 troops, new troops, besides the all deployed soldiers in such a tiny state, how is that 60,000 people have lost their homes? How is that the death toll continue to rise even today? We need to ask this. Instead, the Prime Ministers and his puppet regime in Manipur continue to say that, the peace is returning in the state, violence has gone down. These are part of his speeches on the floor of the House. If the the violence has gone down, how come the death toll continue to rise even today? When he first says that peace has returned, according to my own assessment that I have done with my team, when he said that the first time, there were 30,000 roughly who were homeless. And today is 60,000 plus. And death toll was below 100, now it becomes 258. This doesn't count, it doesn't include those persons who are missing. Missing person में security का garrison से भी है. That's what I said. So who's going to be secure if you are not secure even within the campus of the largest military headquarters in Manipur? How safe are we? Now who's supposed to answer these questions? I said that is why on this platform I said don't blame a particular community. Blame their elites and politics. And most importantly, let's understand the meaning of government. Why do we have government? It is the responsibility of the government. Look at the Indian Constitution, Article 12. All your fundamental rights, that chapter begins with Article 12, trying to remind you what is state. And all the fundamental rights enshrined in the Constitution is an obligation on the state to protect and preserve and ensure those rights. इसीलिए उस फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर का पहला आर्टिकल 12 में स्टेट का मीनिंग को डिफाइन किया गया उसमें. And now that state has completely absorbed of its responsibility. Not only that, it hurts me because as a student of social science, people say what was tribalism in Africa, communalism was in India. They essentialize the conflict between Hindus and Muslims, just as the conflict in Africa. As if those conflicts are a natural, essentialized part of those societies. Strange as it may seem, Indian scholars, one of the leading scholars of the post-colonial theory, they have been questioning such things, and they have reminded us that communalism in India is part of the process of the colonial state itself. There's nothing essential about that. और फिर बोलता है हमारा प्राइम मिनिस्टर as if this Kuki-Meitei conflict is a natural, essentialized part of that society. The fact is, it is a product of Indian state. Began with the colonial state during British, the way they classify people, the kind of laws they have injected, the consciousness and practices created, which the Indian state continued. Many of these communities were armed by the security personnel and forces and agencies to fight another group. Everybody knows this. If you read any expert on Northeast who wrote books, I can name one of them. Suvir Vomik, one of the prominent journalists. So he said that many of these groups, armed groups, were established to fight the Nagas and the Meitei armed groups. And you said this is an essentialized conflict. And you talk about the connection between the politician and the armed groups. How many of these Kuki MLAs have connection? Husband, wife is a member of the assembly, husband is the chairman of the armed group. And how come that people were allowed to roam around with arms if it is not an implicit encouragement by the Indian state, whether it was in Imphal or outside? Now you need to ask these questions. So the problem in Manipur is not merely of a community crisis.
The Indian state under the Modi Saha duo is implicated in this violence, and that's why they are not stopping it. That we must continue said. जब तक मैं इस हाउस का मेंबर बन के रहूंगा, I'm not going to keep quiet. I'll keep on raising these issues. And that is one of the way to do it is here. We here in Delhi, you shout in Imphal, nobody bothers. So the fact is that you must be here and speaking, and that's why we organize this. And even if a few members comes here, thank you for your support, and thank all my party members and colleagues from the parliament who have came in such a short notice. I have only informed them yesterday about this, and I'm very thankful to Shashiji also for coming in. And I'm also expecting one of my old friend Yogendra Yadav. He is also on the way, and hopefully he will join us and also reflect on our situation. We need support. Please remember, it's not a Manipur's problem. This is an Indian state problem. When the constitutional system collapses, this speaks on this country. Please do not forget that. As long as you think this has something to do with a distant place called Manipur, you are already pushing, then people will begin all over again to ask this question, what is the place of Manipur in the Indian Union? And the remaining, these youths of Manipur and the Northeast in general will begin to sense what is our place even today in this country, depending on how we behave and how we react, respond to this crisis. And a better sense should prevail among the Indian elites, particularly the BJP leaders, and they are doing more harm to this country than to Manipur through this violence. Thank you. Today, as a part of sit-in protest against the double-engine government of Manipur and center, the entire people of this nation knows that what is happening there in Manipur during the last 19 months, approaching 19 months. But sometimes we feel that the people of entire country thought that they may not be thought, they may thought sometimes what we feel that. So kya karega Manipur is a small state just like a bindu of the entire nation. Let them kill each other. Let these two communities kill each other. Whomsoever can conquer, can kill. Let them rule the state. Sometimes we feel that. I don't know if there is a either hidden or secret agenda of Narendra Modi and Amit Shah. If there is any hidden agenda or secret agenda which will be beneficial for the entire nation or at least for the Northeast, it's all right. We will suffer now like anything. We'll suffer, we'll sacrifice for the country and for the Northeast. But we don't know, is there any secret and hidden agenda? Today, what is happening there in Manipur, if it is happened any other state of the country, particularly if it is happened, for example, in Gujarat, Mr. Modi and Amit Shah will just silent spectator for last nearly 19 months. Please imagine. Or if it is happened somewhere here in Delhi or here maybe in UP or any other part of big state, we are extremely sorry. If they thought that Manipur is not a part of India, that is all right. You know, the entire country will know
Manipur never part of India or any other neighboring state like Assam and Nagaland. India attained independence 15 August 1947. Till 1949, even after 2 years of India's independence, Manipur never part of India. Manipur a princely ruled sovereign country. But only after 1949, Manipur was merged with the Union of India. But that too, the younger generation, what they thought that why? The then our predecessor, maybe the then ruler, King Buddhachandra, why he easily accepted to merge with the Union of India. Because of that, now we are suffering, we are just like downtrodden, they are looking like this. Sometimes our young generation, they feel that we should have to be demand to restore pre-merger status of Manipur. Sometimes we feel that. But of course, India bloc and particularly Congress never thought that. We believe that we are Gandhian, we believe Gandhian theory and peace without any violence. We will continue to fight till complete normalcy restored in Manipur. We are also part and parcel of this vast country. We are also citizen of this country. We have every right to fight. But the country should know that though Manipur is a small state, we can challenge like anything. Maybe in the field of sports, in the field of education, maybe in the field of culture, anything we can fight, like anything. So we don't mind, we will suffer further, and they can do whatever they like, but we will not back out. We will continue to fight till the complete normalcy restored in the state of Manipur. You know how many people has killed, including women and child. How many people has been killed? More than 200, nearly 300 people. There are a report of still 30 people are missing. We could not understand where they live. Still more than 30 people are missing. And more than 60,000, including all women, men, they are taking shelter in the relief camp for the last 19 months. If it is happened in Gujarat, whether Mr. Modi and Mr. Amit Shah will keep silent. This type of person, if they continue to rule this country, India will definitely finish like Manipur is finished everything. Everything is finished in Manipur. All are destroyed. Whether it may be in the economy or culture, who are suffering most is artists. Those who are famous artists in the country, they are suffering like anything. All institutions are sometimes without any notice, they close immediately, and internet even banned. So how much we are suffering we cannot express in our mouth. Even we don't like to come here in national capital also. We may be shouting, we may be indefinite hunger strike or maybe or sit in protest without time limit if they are giving permission. Even then, they did not listen, we know. They have
either hidden or secret agenda. This is up to this extent what we feel that. So, from today's our sit-in protest, at least those people not like BJP and the government, those other people of this country, they will feel that this Manipur also is a part of India. The citizen of this Manipur is also the citizen of this country, and we will definitely find some solution. Though we may be invited repeated times to visit Manipur, you have time to visit anywhere in the globe, but you have no time to visit Manipur. Even in our neighboring state, Assam, Prime Minister Modi visit there, even stay night. He's riding the elephant in the Kaziranga, but he has no time to spend for 20-30 minutes for visiting to Manipur. I don't know what is his mind. Therefore, today's our sit-in protest at this Jantar Mantra, at least we will ventilate something to the genuine people, genuine citizens of this country, and we will hope and we will continue to fight till the complete normalcy is restored in Manipur. Thank you. 18 महीना हो चुका है जब से मणिपुर में हिंसा और दंगे हुए थे, और 18 महीने के बाद आज भी मणिपुर में स्थिति शांतिपूर्वक और सामान्य नहीं बना है। आज दिल्ली में मणिपुर से हजारों मील दूर पर मणिपुर से हमारे साथी दिल्ली आए हैं ये बताने के लिए कि मणिपुर में शांति और नॉर्मलसी के लिए जो केंद्र सरकार को जो कदम उठाना चाहिए था वो उठाए नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस लंबे समय में एक भी टाइम मणिपुर जाने के लिए तैयार नहीं हुए, और आज मणिपुर में वहां की जो सरकार है, बीरेन्द्र सिंह की सरकार, ये सरकार और केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो मणिपुर की सरकार, एक इंजन की सरकार पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल है, और केंद्र में जो डबल इंजन की सरकार है वो सरकार पूरी तरह चुप बैठे रहे हैं, और इससे अभी मणिपुर की जनता के लिए जितनी परेशानियां आ रही है, अभी भी 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हैं, अपने घर जा नहीं पा रहे हैं, और इस सरकार के पास अभी तक मणिपुर में हस्तक्षेप करके एक राजनीतिक हल निकालने के लिए कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं रहा है, और उसका परिणाम है कि केंद्र सरकार सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अफ्पा को इस्तेमाल करके सोचते हैं कि वहां की स्थिति को काबू में ले आएंगे। हम इसके पूरी तरह खिलाफ हैं। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट एक ऐसा कानून है, काला कानून है, जो मणिपुर की जनता पर भारी दमन करेगा, और इसीलिए आज
इस प्रोटेस्ट के माध्यम से इंडिया ब्लॉक के सब पार्टियां मिलके ये मांग कर रही है कि फौरन मणिपुर की जो बीरेन्द्र सिंह सरकार है उसको हटाया जाए और केंद्र सरकार राजनीतिक हल के लिए सबसे बातचीत करके कुछ फैसले या निर्णय पर आए। हम चाहते हैं कि मणिपुर की जनता के हर कौम के लिए, सब कम्युनिटीज के लिए अपने जो अधिकार है वो सुरक्षित हो, मणिपुर की जो एकता है वो कायम रहे और नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में इस तरह जैसे स्थिति बनी है उससे पूरे वहां के इलाके के लिए खतरा है। तो आज ये शर्म की बात है कि हमारे यहाँ एमपीज बैठे हैं, गौरव जी बैठे हैं, उनको पार्लियामेंट में इस मसले पर बहस करने के लिए आज मौका नहीं दिया जा रहा है, उसकी आवाज दबाया जा रहा है। इसीलिए आज जंतर मंतर में यहाँ बैठ के हमें ये मांग उठाना पड़ रहा है। लेकिन हम मणिपुर की जनता को आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारे देश के तमाम जो जनतंत्र और सेक्युलर ताकतें हैं वो सब मणिपुर की जनता के साथ हैं। हम आपको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि आपके इस संघर्ष में आप शांति और नॉर्मलसी के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए हम पूरी तरह आपके साथ रहेंगे। हम अपने भाईचारा प्रकट करते हैं। धन्यवाद। मणिपुर को आज दिल्ली जंतर मंतर आना पड़ा क्योंकि मणिपुर दिल्ली से बहुत दूर है मोदी सरकार के लिए। मोदी सरकार के मानचित्र में अभी मणिपुर उत्तर पूर्वांचल नहीं है। मणिपुर का आम आदमी अस्थिर है। मणिपुर का छात्र, मणिपुर का अभिभावक आज नींद नहीं है, सुख शांति नहीं है। लेकिन मोदी सरकार अमेरिका में जाके गहरी नींद पे सो रहे हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा ना कहते हुए ईवीबू सिंह जी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, मेघा चंद्र जी कांग्रेस के अध्यक्ष मणिपुर को धन्यवाद देते हैं कि आज मणिपुर का आवाज़ आज दिल्ली में लाने के लिए आज आप ये जंतर मंतर में ये कार्यक्रम किया और मोदी सरकार को नींद से जगाने के लिए आज ये कार्यक्रम किया। मोदी सरकार को गुजारिश करते हैं, मोदी सरकार को अपील करते हैं, आप उठिए। आप आम आदमी, छात्र, अभिभावक आज मणिपुर का स्थिर है, वो नींद में नहीं है। आप नींद से जागिए और मणिपुर का तरफ एक कदम आप देखिए। धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूं इस संघर्ष के लिए और आपकी मांग दोहराता हूं कि मणिपुर में शांति के लिए केंद्र सरकार पहल करे और वहां पर जल्दी से जल्दी शांति स्थापित करें। मैं बस दो बात कहने के लिए आपके पास आया हूं। पिछले सत्र में डिबेट में प्रधानमंत्री लगभग 2 घंटा बोले थे और पूरे 2 घंटा विपक्ष के इंडिया गठबंधन के सारे सांसदों ने नारेबाजी की। उसके बाद एक डिबेट आया कि आपको जैसे अधिकार था बोलने का वैसे ही प्रधानमंत्री को भी बोलने का अधिकार था, आप नारेबाजी क्यों कर रहे थे। हमने कहा कि सवाल मणिपुर का था, हम नारा यही लगा रहे थे मणिपुर के लिए 2 मिनट, मणिपुर का भी डिबेट में ले आओ, चर्चा में ले आओ, लेकिन एक शब्द बोलने के लिए सत्ताधारी दल तैयार नहीं था। हमने साफ साफ कहा कि ठीक है प्रधानमंत्री का भी अधिकार था, लेकिन देश का छोटा से छोटा राज्य अगर अपने को तनहा और ऐसा महसूस करेगा कि उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो इंडिया गठबंधन इस बेरुखी के खिलाफ
ईंट से ईंट बजा देगा, एकताबद्ध होकर के हम लड़ेंगे और वहाँ के न्याय के लिए संघर्ष करेंगे। और इसीलिए हमने वो 2 घंटे तक बेल में खड़ा होकर के नारेबाजी की थी। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि हमारे संविधान ने साफ साफ लिखा था कि हमारा संविधान अपने नागरिकों के बीच में लिंग, जाति, भाषा और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। लेकिन भाजपा सरकार पूरे देश में हम देख रहे हैं धर्म के आधार पर विभाजन कर रही है, लड़वा रही है, भाषा के आधार पर दंगे करवा रही है, जाति के आधार पर विभाजन करवा रही है और पूरे देश को एक अराजकता में झोंक देना चाहती है। हम इसके खिलाफ इंडिया गठबंधन के लोग देश में मैत्री, भाईचारा, एकता, प्रेम के लिए लगातार संघर्षरत हैं और मणिपुर के न्याय के लिए, भाईचारा के लिए भी हम लड़ते रहेंगे। हम यह भी कहेंगे कि हमें उनकी राजनीति को समझना है और लिंग, जाति, भाषा और धर्म के आधार पर आपस में कहीं भी टकराव हैं तो उनको हमें रिजॉल्व करना है, हमें हल करना है। और केंद्र सरकार जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को अडानी के हाथ में सौंप देना चाहती है, देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करना चाहती है, उसके खिलाफ मिलकर के संघर्ष करना है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Good afternoon, everybody, and all the respected honorable MPs, MLAs, and all these leaders of the India Alliance, and all the state leaders, and all these frontier leaders of the different alliance parties. So I will just take 1 minute to release one leaflet here, and I request to distribute. Mr. Kabir, you please distribute all these 1 copies to the leaders. So I will release this leaflet. This in fact this leaflet is in connection with the present unprecedented turmoil situation there in Manipur, and under this double engine government the state is totally destroyed, and we are quite desperate. The youth are quite desperate, and the people were killed now and then, and the present turmoil situation is still continue since 3rd May 2023, and still the position is still continue. That's why we are here to this sit-in demonstration here in this connection with this sit-in demonstration. I am just releasing this leaflet on the present situation of Manipur, and I will declare that I will announce this to release. So all the people please stand up one, and I will release this. So the leaflet in connection with the present unprecedented turmoil situation there, I release the leaflet namely Manipur catastrophe under the double engine government led by BJP. Thank you, friends. Thank you. Long live Manipur. Long live Manipur. Save Manipur. Save India. Save India. Save Manipur. Save Manipur. Save India. Save India. Long live Manipur. Thank you all. The Northeast is supposed to be the gem of this great country, India. We were expecting that government of India will deliver the security and shelters and solutions, rehabilitations and rights, youth empowerment and employment, infrastructure and development, human concern, and we were expecting that Armed Special Force Act will be removed from the Northeast. But instead of that, the BJP government ruling in the center as well as ruling in the state, Manipur state, both the BJP government is trying to harass the brothers and sisters among the Northeast. They are allowing us to fight each other. They are weaponizing among our brothers and sisters. Instead of giving us solutions, instead of bring under one umbrella, they are dividing us. One Northeast citizen, even Northeast citizen is killed. It is a citizen of India.
when the northeast state is burning, that country, India, is burning. So it has to be equally meted treatment. And the BJP government, why they are not respecting the human rights of the northeast people? We want that the Prime Minister should visit Manipur. He should assess the ground works where the people are having the problems. And the same problem, even in the Nagaland, we have 2 agreements, the Naga political solutions. That also, after having agreements for the last 9-10 years, Government of India is not coming forward to give the solutions. The tendency is also the problem is creating in our state. If the Government of India allows all Northeast people in the trouble, thinking that the land of the peace, the champion of the democracy, the country, the Indian country is burning. So we want to appeal all of you to support for bringing the last solution for the Manipur as well as for the Northeast. Thank you. हम सभी जानते हैं मणिपुर में काफी देर से क्या हो रहा है, और हम ये भी जानते हैं मणिपुर हमारे देश का, भारत का एक अंग है। और जब हमारे देश के किसी भी जगह अगर ऐसी चीजें हो, वायलेंस हो, और सरकार उसकी जिम्मेदारी लेने से पहले, जिम्मेदारी लेने के बजाय उससे कन्नी चुराए, उससे भागे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले, तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमको साथियों। आज हमारे देश में मणिपुर में हमारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ जो वो हो रहा है, उनके परिवार जो आज की डेट में झेल रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपी की सरकार की है। पर वैसा कुछ नहीं उन्होंने किया, वहां जाने की कोशिश भी नहीं की। और जब मार्केटिंग करने की बात आती है तो हमें टीवी में दिखता है यूक्रेन और रशिया की वार भी रुकवा दी पापा, लेकिन अपने देश में अपने भाई और अपने बहनों के साथ जो हो रहा है उसके लिए एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है। मैं आज की डेट में, आज के दिन ज्यादा वैसी बातें ना करके एक गुजारिश करूंगा ऊपर वाले से कि हमारे प्रधानमंत्री जी को थोड़ा बुद्धि आ जाए और सोचे हमारे देश में, मणिपुर में जो हो रहा है उसको सुधारने के लिए जल्द से जल्द कुछ कदम उठाए जाए, जिससे हमारे देश के उस हिस्से में जो भाई बहन रह रहे हैं, बुजुर्ग रह रहे हैं, वो अपना जीवन अच्छे से बिताएं। कितने लोग वहां पे माइग्रेट हो गए, कितने लोगों के साथ वायलेंस हुआ है, इसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन अभी भी वो चलता जा रहा है। सब उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सोई हुई सरकार जागे और जल्द से जल्द ऐसे कदम बढ़ाए जिससे हमारे वहां के जो भाई मणिपुर के हैं उनके जीवन में नॉर्मलसी आए। यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। जय हिंद। Long live Manipur! Long live Manipur! Manipur. We have been hearing about this, but it seems like this government doesn't care about the lives and the blood of Manipur. It seems like this BJP government is not content, satisfied with the life and blood of Manipur. They doesn't bother about the people from the northeast. It seems like they have taken the northeast for granted. Therefore, I would like to request and ask, who is benefiting from the life and the death of Manipur? Before 2 years, Manipur was peaceful. Before 20 years, Manipur asked for the ASPA, and then somewhat they've managed to kick away ASPA. And again, now they're pulling back and putting back ASPA again to Manipur. Who is behind and who is benefiting about with this particular incident that is occurring in Manipur? That's why I would like to request our Manipuris, we should not kill each other. We should try to love each other, because somebody is behind this particular conflict, who is benefiting from this particular incidents. Otherwise, Manipur is peaceful. We are Northeasterns are peaceful, loving people. We don't like war. We don't like to continue with the militancy. We don't like to embrace with the bloods and lives of our Northeastern. That's why we, as a Northeastern, we should support each other. We should try to think who is behind this particular incidents and who is behind this particular conflict. Manipur, Kuki, Naga, everybody loves each other, but somebody is benefiting out of this conflict.
So we should try to pinpoint who are the main men behind. This BJP doesn't bother about our life. This BJP is taking our life into consideration. That doesn't bother. So I would like to request our Northeastern people, not only Northern people, the people from the Indian Alliance, that we should come up and make them realize the way this BJP government is thinking about our life from the Northeast and the people from our BPL people and the downtrodden people. They don't bother about our life. They only think about the benefit and the benefit only. They don't have a moral code. They understand about the moral rules. They are self-assertive. They are selfish. They are money-minded. They think only about themselves. They are idealistic. So we should think properly. We should not fight amongst each other. Our fighting is benefiting them. Our life, our killing, they will never be satisfied with the blood. That's why I would like to request and urge all the Northeastern, not only the Kuki and Naga, not only the Kuki and Meitei, we should love each other. We should try to compromise some way or the other. Otherwise, we will end up killing each other only. That's why this government doesn't think about us. So we should think properly. I would like to again shout, long live Manipur! Long live Manipur! Long live Manipur! Thank you. 18 महीने से हम सभी लोग सुन के आ रहे हैं मणिपुर जल रहे हैं। हम इसके साथ ये भी हम सुन के आ रहे हैं हमारा देश में एक डबल इंजन की सरकार चल रही है। यहाँ पर जो प्रस्ताव दिया है उसी में भी लिखा है डबल इंजन गवर्नमेंट है, लेकिन बदकिस्मती ये है ये डबल इंजन है, एक सामने लगाया है एक पीछे लगाया है, इसलिए दोनों तरफ खींच रहे गाड़ी, एक इंच भी चलता नहीं है। हम ये चाहते हैं गाड़ी की दोनों इंजन एक साथ लगाइए, गाड़ी को चलने दीजिए। इसी में बैठ करके प्रधानमंत्री जी थोड़ा मणिपुर जाके देखिए, वहां पर हिंदुस्तान की जो जनता, मणिपुर की हमारा भाई बहन, जो लोग हमारा देश की आजादी की लड़ाई में किस प्रकार की भूमिका अदा किया है, ये हमारा प्रधानमंत्री को याद होना चाहिए। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजादी हिंद फौज जब मणिपुर भी जगह पहुंच गया था, मणिपुर की जनता हथियार उठा करके ब्रिटिश लोगों के खिलाफ जो लड़ाई करके वहां का जमीन कब्जा किया था। हिंदुस्तान की जनता पहली बार अगर हिंदुस्तान की कोई जमीन अगर कब्जा किया है, ये मणिपुर की जगह है। वहां पर आज भी मोइरांग में आजाद हिंद फौज का सरकार की ऑफिस, म्यूजियम सब लगा हुआ है। वही है मणिपुर की जनता की इतिहास। देश की आजादी की लड़ाई में उसका भूमिका ये था। उसी मणिपुर की जनता को इस प्रकार 18 महीने से इस प्रकार का जो अवस्था को झेलना पड़ती है, प्रधानमंत्री का 5 मिनट भी नहीं मिलते हैं उसके बारे में बात करने का और इसके बारे में जाके देखने के लिए। अंबानी का लड़का का शादी में जाने के हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन जाने के समय ये भी उसको याद होना चाहिए वो जनता वहां पर किस प्रकार की परिस्थिति के सामना करना पड़ती है। इस देश की प्रधानमंत्री का भी जिम्मेदारी होते हैं वहां जाकर के देखने के लिए, उनको आश्वास दिलाने के लिए। हम हैं आपके साथ, हम सभी लोग मिलकर के रहना है, हमारा देश का संविधान को रक्षा करना है, भाईचारा रखना है, ये दिखाने का जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री का है, देश का गृह मंत्री का है। वहां जाकर के ये एकजुटता दिखाने का जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते हैं। यहाँ पर हम लोग सुना है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बता रहे थे, पार्लियामेंट के अंदर भी इस बात को उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर शब्द से इन लोगों की नफरत है। मणिपुर शब्द बोलने का मौका भी नहीं दे रहे पार्लियामेंट के अंदर, इसीलिए आज इस जंतर मंदिर पर आप लोगों को आना पड़ा है। हम जरूर जो लोग यहाँ पर प्रोग्राम आयोजन किया है इन सभी को फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से धन्यवाद देता है, आभारी हूँ। आने वाले दिन में भी शांति बहाल रखने के लिए आपके साथ हम सभी लोग मिलकर रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। I have just returned from Manipur a few days back when this new round of violence has again restarted. It is more than 1.5 years now that Manipur has been burning. If I remember right, I think from May last year onwards, it has been going on. This kind of violence and the total failure of the so-called double-engine government to bring peace to the region. When I visited Manipur,
I asked the people who are attending a meeting there, earlier when we come to Manipur and ask Nungai Rivra, immediately there is a response, a quick response, Nungai Ri. But today, the government has created such a situation that whichever community it is, when we ask how they are, they cannot give a response that they are doing fine. More than 60,000 people are forced to live like internal displaced people in the state of Manipur. जो पिछले 1.5 साल से मणिपुर के 60,000 से ज्यादा लोग अपने ही राज्य में वो रेफ्यूजी जैसे, अभ्यर्थी जैसे रहने में मजबूर है, क्योंकि यहाँ का जो सत्ता में बैठने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह वो नहीं चाहते कि मणिपुर में शांति का बहाल हो। ये स्थिति है वहां पे, और बड़े बड़े बातें कहते हैं जैसे कि मणिपुर का जो इतना दिन से जो वहां स्थिति ऐसा बिगड़ते जा रहा है उसको सुधारने में कुछ नहीं कर पा रहे, और नरेंद्र मोदी के जो प्रचार है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है उसको भी मोदी जी रोक सकते हैं. Big claims that Narendra Modi is a world leader who can bring peace to Ukraine and Russia, stop the war in Russia and Ukraine. But what has been happening in our own country, that for more than 1.5 years, it has been burning with more than 200 people killed. More than 200 people killed. And nothing has been done by this government. That is the situation. So today, if we have assembled here, it is a very significant thing that the leadership of all the India bloc parties have come here. Members of parliament are trying to raise your issue in the parliament, but the speaker and deputy chairman, they are not allowing them to raise this issue. The government doesn't want this issue to be discussed. My friend from Mizoram, member of parliament, spoke how the people of Manipur, people of Northeast, whether it is the Kukis or Meiteis, they want to have peace and prosperity together, but someone is not interested in peace there. Who is not interested in peace? What is the reason? ये क्या कारण है कि देश में जो सत्ता में बैठे हैं इतने लोग के जान गंवाने के बाद भी वहां पे शांति का बहाल करना नहीं चाहते? वहां का किस तरीके से उसका खनिज संपत्ति और वन का जो संपत्ति है इसके लूटने का एक साजिश भी इसके पीछे है, ये भी कहा जाता है. It is a very sensitive area of our country, and in such a important state, the total indifference of this government is something to be condemned. I think this initiative will take forward the steps in the direction of bringing peace and reconciliation in the state of Manipur. It's an important state. We are all concerned about the situation there. The attacks that are going on the women, the children, जिस तरीके से महिला और बच्चों पर हमले हो रहे वहां पे, आप सभी देखें जिस तरीके से हमले हो रहे, और उसके खिलाफ भी एक शब्द बोलने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार नहीं है. मैं जब 15 तारीख को पिछले महीने मणिपुर में था, ऐसे खबरें आ रहे कि किसान अपने फसल को काट के फसल को रखा है, उस पर आग लगाया जा रहा है. The crops that have been harvested are being burnt, and your armed forces or whatever peace keeping forces are unable to ensure peace. That is the situation, and we feel that the chief minister is culpable, the home minister and prime minister are culpable of creating such a situation. The chief minister has to go, and that is a unanimous voice of Manipur, not of any political party. It is a collective opinion of the people. When I went there, I heard on the field. I extend solidarity with you. It is a difficult struggle. You have a anti-people, very divisive kind of government at the center.
वो देश का जो टुकड़ा करने का, देश में को अलग अलग हिस्सों में बांट के उनका सत्ता में रहने का साजिश चलता है। उनके खिलाफ हम लोग सब एकजुट होने का जरूरत है। ये जो आज का सभा है उस दिशा में एक बहुत ही बढ़िया कदम है। जो इसका ऑर्गेनाइजर्स है उनको बधाई देते हुए मैं अपना बात खत्म करना चाहता हूं। इंकलाब जिंदाबाद। अभी मैं बातें सुन रहा था मणिपुर पीसीसी की, उन्होंने बोला कि हम येलो लीफलेट लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ बैठे हुए इस लीफलेट को एक बार रीड करेंगे तो आपकी रूह कांप उठेंगी कि जिस प्रदेश की 32 लाख पॉपुलेशन है उसमें 60-70 हज़ार लोग अभी मिसिंग हैं और गवर्नमेंट के पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उस 70 हज़ार की नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी की लीड गवर्नमेंट ने वहाँ पे अपनी मिलिट्री लगाई हुई है। मुझे याद है जब मैं मणिपुर गया था भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, उस समय मैं मणिपुर यूनिवर्सिटी में भी गया, तो जब बच्चों से बात हो रही थी तो देखने को मिला अगर किसी भी प्रदेश में, मैं इस देश की नहीं पूरी दुनिया में बात करूंगा, कहीं भी ऐसी घटना किसी कम्युनिटी के बीच, किसी ग्रुप के बीच इस टाइप की वायलेंस क्रिएट होता है तो सरकारों का हमेशा काम होता है कि उसमें पीस क्रिएट करें। तो मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा कि क्या किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने, या मैंने मणिपुर के कुछ उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करे थे, कुछ कैंप्स भी देखे थे, कि क्या कुछ पीस को लेकर कुछ कार्यक्रम या सरकार के कोई मिनिस्टर या मोदी जी आए, उनका अभी तक कोई भी इस तरीके का कैंपेन लॉन्च नहीं करा गया। बार बार जब वहाँ मीडिया आती है, इंटरनेशनल मीडिया आती है, तो उनसे छुपाने के लिए प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो उल्टे सीधे बयान दे देते हैं और झूठ बोल देते हैं। और वास्तव में मुझे वो अब ये लीफलेट पढ़ते वक्त वो न्याय यात्रा का दृश्य दोबारा याद आ गया, जिसको देखकर, उन कैंप्स को देखकर लोगों की रूह कांप उठती थी। वो मणिपुर की तस्वीरें, और ये मुद्दा मणिपुर का नहीं है। लोग कहते हैं मणिपुर का मुद्दा है, ये हमारे पूरे देश का मुद्दा है कि इस देश का मणिपुर एक हिस्सा है। और जब मणिपुर में ये पीस हो रहा है तो दोस्तों याद रखना, अभी ये मणिपुर है, हो सकता है कल को इस देश में किसी और राज्य में भी हो रहा हो। अगर आज हमने शांति मणिपुर में बरकरार नहीं रखी, अगर आज हमने ये पीस मणिपुर में बरकरार नहीं रखा, आज हमने कम्युनिटीज को मणिपुर में एक नहीं रखा, तो समझ लेना ये आग आने वाले समय में आपके घरों में, आपके कैंपसेस में, आपकी गलियों में भी हो सकती है। तो लोग कहते हैं मणिपुर का इशू है, मैं कहता हूँ ये मणिपुर का इशू नहीं है, ये हमारे पूरे भारत देश का इशू है। इस देश का मणिपुर हिस्सा है। जब बात आती है किसी बड़े स्पोर्ट्समैन की, और खास तौर पर मैं मणिपुर के लिए इसलिए बोलना चाहूंगा, जो हमारे बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वो हमारे लिए डबल महत्वपूर्ण होते हैं कि बॉर्डरिंग स्टेट्स पे और भी प्रॉब्लम होती है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल और कंट्रीज का भी प्रेशर होता है, और हमारे देश के वो रक्षा कवच होते हैं। तो मणिपुर हमारे देश का एक रक्षा कवच है। तो जब उस रक्षा कवच में कुछ कमजोरियां देखने को मिल रही हैं और कुछ वायलेंस चल रहा है, तो मोदी जी, कल की मैं उनकी वीडियो दिखाता हूं, कल वो उनके पास समय है जयपुर में इन्वेस्टर समिट लॉन्च करने का, जिसमें अडानी जी उनसे पहले वहां पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट पे। आप लोगों ने मेरे मीडियम के माध्यम से तस्वीरें देखी। मोदी जी के पास समय है पार्लियामेंट सेशन के दौरान शाम को सिनेमा देखने का, लेकिन मोदी जी पर समय नहीं है कि मणिपुर में जाकर, आज भी उन रिलीफ कैंप में जाकर उन लोगों को देखने का और मणिपुर में पीस की बात देखने का। और मैं तो खुले मंच पर ये बात बोलना चाहूंगा, अगर नरेंद्र मोदी जी मणिपुर नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी इस साजिश में या तो शामिल हैं या वो मणिपुर को इग्नोर कर रहे हैं और वो वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर कोई भी देश का प्रधानमंत्री, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी जीता हुआ प्रतिनिधि उन प्रदेशों में पीस को लेकर अपनी बात नहीं रखना चाहता, उन प्रदेश को विजिट नहीं करता। पहले सुनने को मिलता था, मुझे अभी भी याद है, मैंने 2012 में अपने राजनीतिक सफर शुरू करा था, एक्टिविज्म शुरू करा था, तो किसी प्रदेश में अगर 2 बाढ़ पीड़ित भी लोग मिलते थे तो उस प्रदेश के नेता, देश के मंत्री बाढ़ पीड़ितों से मिलने जाते थे। अगर कोई किसान धरने पे बैठा होता था, वो भट्टा पासवान से लेकर तमाम इस देश में कोई जय हो, तो कांग्रेस पार्टी के और तमाम वो नेता, उस समय के नेता किसान आंदोलनों में हिस्सा लेने जाते थे, किसानों की बात सुनने को मिलती थी। लेकिन मैं मणिपुर पीस से पूछना चाहता हूं, सर कितना समय हो गया मणिपुर के अंदर वायलेंस होते हुए? अभी तक बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर जी का इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मणिपुर को लेकर मणिपुर को जाकर विजिट करें। तो ये बहुत एक गंभीर इशू है और ये पूरे देश का इशू है, खाली मणिपुर का इशू नहीं है। हमारे देश का एक रक्षा कवच की तरह मणिपुर हमारे देश का एक हिस्सा है।
तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि मोदी जी आपकी आंख खुलनी चाहिए, नहीं खुलेगी तो अभी मैं बता भी रहा था कि अब हम देश के जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भी जाकर मणिपुर को लेकर और बात करना शुरू करेंगे कि मणिपुर का इशू नहीं पूरे देश का इशू है। उन्हें मणिपुर में पीस होना चाहिए, वो खास तौर पर जब 1 साल 2 साल 5 साल के बच्चे, और सोचिए बात करते हैं ये आईटी की, ऑनलाइन शिक्षा की, आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रदेश में आज भी कर्फ्यू लगा हुआ है, जिस प्रदेश में आज भी इंटरनेट बंद है, जिस प्रदेश में आज भी कुछ, मैं मानता हूं कुछ ऐसे एरिया होंगे जहाँ के स्कूल तक बंद कर रखे होंगे। सोचिए वहां के छात्रों का, नौजवानों का, जो पूरा दुनिया में सबसे युवा देश भारत देश है, वहां के छात्रों का, नौजवानों का क्या भविष्य होगा। एक डर का माहौल आज भी उस प्रदेश के अंदर है। और वास्तव में अगर प्रधानमंत्री जी इस डर को निकालना चाहते हैं और पीस चाहते हैं तो सबसे पहले संसद सत्र खत्म होकर मणिपुर में विजिट करें और खास तौर पर मणिपुर वासियों से माफी भी मांगे कि इतना समय क्यों लग गया उनको मणिपुर के अंदर आने में। तो मैं और बातें नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ा दुख का पल भी लगता है कि जब हम यहाँ जंतर मंतर पे भी बैठे हैं और 60-70 हजार लोगों की बात करते हैं और हम सब लोगों ने यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो वीडियो, वो फुटेजेस देखी जरूर है कि जिसमें आप उस दर्द को महसूस कर सकते हैं कि जब किसी के घर में आग लगती है, जब किसी का 2 साल 5 साल के बच्चे की मृत्यु होती है, वो दर्द बहुत भयानक होता है। और कहीं ना कहीं मुझे बहुत खुशी भी, ये थोड़ी बहुत खुशी भी महसूस हो रही है कि इंडिया ब्लॉक के सब लीडर्स ने, कांग्रेस पार्टी ने, हम दोनों मिलकर इनिशिएट लिया कि बार बार हम मणिपुर की बात करेंगे, कितना वो गुमराह करने की कोशिश करेंगे लेकिन हम मणिपुर की बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Respected people of Manipur, leaders of Manipur at Jantar Mantar. First of all, let me thank and congratulate our PCC President and our CLP leader for leading a protest of India bloc from Manipur, since they have been inviting the Prime Minister to visit Manipur since last 1.5 years, and our Prime Minister preferred to visit worldwide, and he forgets that the Manipur is the part of India. So since our Prime Minister is not visiting Manipur, today people of Manipur have come here in Delhi to meet the Prime Minister. They have approached him for the appointment, and Prime Minister not even ready to meet the people of Manipur who are here with the grievance, with a request for the Prime Minister to resolve the long pending issues of Manipur, that is to bring the peace in the state. All of them are protesting. Many MPs have come here, many national leaders have come here. They have only one plea. They want the peace and harmony in the state of Manipur. Nothing more than that. But the Prime Minister, I don't know for what reason, he has been avoiding Manipur. Till that it was also fine. Today we have two chief minister in Manipur. One chief minister, whose name is called Biren Singh, and there is another chief minister sent by the Narendra Modi and Amit Shah team to rule the state, and his name is Kuldeep Singh, a retired officer, in the name of security advisor. Today all the powers of the chief minister, the entire state powers have been taken by one retired officer, and this is a bitter shame, is a crime again on the democracy of India, that Manipur today is ruled by two chief ministers. Now sitting chief minister Biren Singh has no powers. All powers have been taken away from him. If he was just little pride with the protest, he should have resigned. This is not correct. Now today we have another DJP. The DJP also they have dominated from Delhi. Now this cannot be acceptable in a democratic, we call it a union of states. And Manipur has been completely sidelined. I thank and congratulate the people of Manipur by showing the unity, coming here together and protesting here.
also thank all the member of parliaments. Rahul Gandhi ji, before becoming the LOP, he visited twice. After becoming the LOP, his first visit was Manipur. So this shows concern that we are disturbed of what is going on in Manipur. And so we appeal once again with the Prime Minister, with folded hands, please visit Manipur. Please resolve the issues and bring peace and harmony in Manipur. Today all the business is collapsed. The hotels are closed down. There is hardly not even 10% occupancy. Complete economy is going down. People's earnings have stopped, and there is going to be a huge problem in the days to come with respect to the economy of the state. We will appeal with the folded hands to the Prime Minister. एक बार आप मणिपुर आ जाओ, लोगों से बात करो, लोगों की समस्या समझो और मणिपुर का जो लॉन्ग पेंडिंग जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व करो. इसके लिए हम आप सब लोग इधर आज बैठे हैं, इस सिट इन प्रोटेस्ट के लिए बैठे हैं, आपको याद करने के लिए कि मणिपुर भारत का एक अंग है, भारत का एक हिस्सा है. आप प्लीज मणिपुर में विजिट करो और ये इश्यूज को रिजॉल्व करो. थैंक यू वेरी मच. जो आज आपने मणिपुर का इशू यहाँ उठाने का प्रयास किया, आप सब देख रहे हैं मोदी जी ने क्या नारा दिया. मोदी जी ने नारा दिया, एक है तो सेफ है, बटेंगे कटेंगे. लेकिन आज मणिपुर में क्या हो रहा है, वहाँ बांट रहे हैं और काट रहे हैं. और एक है तो सेफ कहाँ है मणिपुर. इसीलिए आज हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं. ये मणिपुर सेफ इंडिया, सेफ मणिपुर का नारा हम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि मणिपुर में जो मोदी जी ने नारा दिया वो नारा विफल रहा. आज सेफ है तो एक है तो सेफ है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा. सिर्फ मणिपुर की बात नहीं है. अब अगर नागालैंड, क्योंकि मैं नागालैंड से आता हूँ, अब नागालैंड में भी देखेंगे तो वहाँ में भी स्थिति कुछ ऐसे ही बनती जा रही है. ये जो 2015 में नागालैंड का नागा इशू उन्होंने पीस का समाधान करने का वादा किया था, आज 10 साल बाद भी किसी को पता नहीं है कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ. और जिस समय वहाँ 2-4 ग्रुप हुआ करते थे, आज 25-27 ग्रुप हो चुके हैं. लोग परेशान हैं. सिर्फ मणिपुर के ही नहीं, नागालैंड के नागरिक अंडरग्राउंड ग्रुपों से परेशान हो रखे हैं. वहाँ के बिजनेसमैन के हालात इतने खराब है कि सब छोड़ के आसाम की ओर और दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं. इसीलिए मणिपुर को समझना होगा, नागालैंड को समझना होगा. और आज हम इसी के साथ यहाँ खड़े हैं कि मोदी जी तक ये आवाज जाए और मणिपुर को शांति कब देंगे इस पर वो जल्द से जल्द कार्य करे. धन्यवाद. जय हिंद. मणिपुर इज पार्ट ऑफ दिस कंट्री. ये सबको बोलने के लिए मैं तो इधर आया है. ये मई में प्रॉब्लम आया, उसी वक्त सीपीएम का ये डेलीगेशन विजिटेड मणिपुर. हमने मणिपुर गया था. इसके अलावा मैंने खुद होम मिनिस्टर से मुलाकात हुआ था as part of an all party meeting. We had told the home minister that if the double engine government is sincere to douse the fire of Manipur, the Prime Minister should lead an all party delegation to Manipur. हमने बोला, ये 18-19 महीने के पहले हमने ये बोला है. The Prime Minister has time to roam around the world. He has visited so many countries. अभी तक उनको वक्त मिला नहीं है हमारा देश का मणिपुर इलाके में जाने के लिए. उनको अभी तक वक्त मिला है. This is a shame on this government. And the country is united that Manipur should be protected. But the state has been on fire for last 19 months. And हम बार-बार ये मामला रेस कर रहे हैं. We are raising this issue on the floor of the parliament. Even now, after so many months, the treasury benches
haven't permitted us to raise this issue in Parliament, either in Lok Sabha or Rajya Sabha. And the Chief Minister, Mr. Biren Singh, he is part of the problem. He has to resign immediately. And the government of India should make sure that the country is taken into confidence, the people of Manipur is taken into confidence. My party is with Manipur. Save Manipur, save India. Lal Salam. हमारे देश के प्रधानमंत्री जो दूसरे देशों में हो रहे युद्धों का बंद कराने का क्रेडिट लेते हैं, बात बात पे मन की बात करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पे मौन रहते हैं। पिछले कई सालों से मणिपुर जल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को इतना समय नहीं कि वहां जाएं और वहां शांति बहाल कराने का कार्य करें। साथियों, मैं 2 लाइनों के माध्यम से जो डबल इंजन की सरकार मणिपुर में है, उसका जो रवैया मणिपुर के प्रति है, वो रखना चाहूंगा कि अगर साथियों, मैं 2 लाइनें जो है मेरी, मैं ये कहना चाहूंगा कि मणिपुर में शांति खत्म होती है तो होने दो, कोई चाय वाले की चाय थोड़ी है। मणिपुर में शांति खत्म होती है तो होने दो, कोई चाय वाले की चाय थोड़ी है। रो लेंगे मणिपुर के हालातों पर भी, रो लेंगे मणिपुर के हालातों पर भी, अभी मणिपुर में कोई चुनाव थोड़ी है। मैं एसएफआई की तरफ से, बस समस्त छात्र समुदाय की तरफ से मणिपुर के साथ एकजुटता प्रकट करता हूं और मणिपुर के साथ हम एकजुट खड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मणिपुर की बात सोच के ये सोचते हैं वहाँ कुछ आपस में झगड़ा हो रहा होगा, मगर चुनावों के बीच में मैं वहाँ मणिपुर गया, काफ़ी रिलीफ कैंप में गया। उनकी जब अगर हालत आप देखें तो आपको अफसोस होगा कि हम लोग यहाँ मैदानी इलाकों में बैठ के हम लोग क्या देख रहे हैं और मणिपुर के हालात क्या हैं। गिरीश जी इंचार्ज हैं, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट, इन्हीं ने जहाँ हमें वहाँ टिकाया है चुनाव के टाइम में, कहने लगे होटल में मत रुकिए, हमारे पीसीसी का जो ऑफिस है उसमें हम वहाँ टिके थे। यहाँ पे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भी आए हुए हैं, किसान कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर इंचार्ज मणिपुर मेघालय। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि मणिपुर के बारे में जितनी आवाज़ उठ सके और वहाँ के लोगों को बहुत जल्दी शांति मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आज मुझसे पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात रखी है मणिपुर को लेकर, लेकिन मणिपुर में आज 19 महीने से जिस तरीके का वायलेंस जारी है, हिंसा जारी है, और इन 19 महीनों के अंदर जो इन्होंने भोगा है मणिपुर के अंदर, आज इस हिंसा के दौरान में जिस तरीके से वहाँ महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से वहाँ शिक्षा का दमन हुआ है, जिस तरीके से वहाँ चिकित्सा लोगों को नहीं मिल रही है, वहाँ की इकोनॉमी एक तरीके से बैठ गई है, और हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके कान पर जू नहीं रह रही। सिर्फ एक बार उन्होंने शब्द मणिपुर के लिए उठाया था, और वो भी ये कह करके उठाया था कि मणिपुर में क्या हुआ जब वो वहाँ पर महिलाओं को नंगा घुमाया गया था, उस चीज़ को लेकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसको लेकर के तोहमत हुई थी कि क्या हो रहा है, केंद्र की डबल इंजन की सरकार वहाँ कुछ समझ नहीं रहा है। अगर यही हालत किसी और स्टेट के अंदर हुई होती, अभी मुझसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो मणिपुर के बोले कि भाई अगर ये किसी और स्टेट में हुआ होता तो क्या होता, अगर मान लीजिए किसी अपोजिशन के स्टेट में अगर हुआ होता तो अब तक वो सरकार बर्खास्त हो गई होती। आज 19 महीने से वहाँ पर सारे इलेक्शन हैं सरकार को बर्खास्त करने के, लेकिन मौजूदा सरकार, केंद्र की सरकार, अपना अमित शाह और मोदी जी उस सरकार को बर्खास्त करना नहीं चाहते। जैसे कि भाजपा के अंदर एक सवाल उठता है कि मोदी नहीं तो कौन, ऐसे ही मैं समझ रहा हूँ मणिपुर में सवाल उठ रहा है बीजेपी के अंदर कि वीरेन नहीं तो कौन। उनको कोई लीडर ही नहीं है उनके पास जो इस मणिपुर को संभाल सके, मणिपुर के अंदर शांति बहाल कर सके। एक तरह की साजिश चली जा रही है, और ये साजिश खाली मणिपुर में नहीं हो रही। अगर आप नजर दौड़ाएंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह ये लोग वायलेंस करा रहे हैं। आज ताजा हालात के अंदर आप देखिए किस तरीके से मस्जिदों के नीचे खुदाई करवा करके मंदिर निकालने की बात हो रही है, सर्वे कराया जा रहा है।
इसी तरीके से मणिपुर के अंदर कितनी सैकड़ों मस्जिदों को तोड़ा गया है, कितने चर्चों को तोड़ा गया है। एक तरह का कम्युनल राइट पूरे हिंदुस्तान में करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझसे पूर्व वक्ता भी हन्नन मोल्ला बोल रहे थे कि आरएसएस का एक ही एजेंडा है कि ये जब तक दंगा नहीं कराएंगे इनको कुछ फलने वाला नहीं है। और यही आरएसएस का कारनामा है कि हर जगह ये कम्युनल राइट कराते हैं। आज इनको बेरोजगारी देश के अंदर नजर नहीं आती, इनको देश के अंदर भुखमरी नजर नहीं आती। तमाम जो एजुकेटेड नौजवान हैं आज उसको नौकरी का कहीं नाम नजर नहीं आता। तमाम पब्लिक सेक्टर को इन्होंने बेच दिया, आज लोगों के लिए नौकरी नहीं है। आज तमाम जो सरकारी स्कूल थे उनको कमर्शलाइज कर दिया। आज यूपी के अंदर 1100 से ऊपर स्कूल उन्होंने बंद कर दिए। आज हरियाणा के अंदर 1100 से ऊपर स्कूल उन्होंने बंद कर दिए। ठीक पूरे देश के अंदर ये स्थिति करते जा रहे हैं और दंगा हर जगह लगा रहे हैं। और जब तक इनके पास हर जगह ईडी है, सीबीआई है, ये अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और यही हालत है कि आज ये इसलिए नशे के अंदर है कि इनको मणिपुर नजर ही नहीं आ रहा। मणिपुर में क्या दंगा चल रहा है, मणिपुर के अंदर शांति हो सकती है अगर ये चाहे तो एक दिन के अंदर हो सकती है, लेकिन ये नहीं चाह रहे। क्योंकि जहां दंगा होगा वहीं ये सरकार चला सकते हैं। बिना दंगे के, बिना कम्युनल दंगे के ये लोग टिक नहीं सकते, क्योंकि लोग इनको हटा के फेंक देंगे। क्योंकि ये लोगों का ध्यान उधर करते हैं। आज महंगाई की बात नहीं कर रहे, आज भुखमरी की बात नहीं कर रहे, आज तमाम तरह के जो एजेंडे हैं, पब्लिक के एजेंडे, जनता के एजेंडे जो जनहित के अंदर होने चाहिए, ये सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। आज अगर संसद के अंदर अडानी का नाम लिया जाता है तो उसको अडानी के नाम के ऊपर संसद तुरंत भंग कर दी जाती है। आज मणिपुर का मुद्दा नहीं उठाने दिया जाता। पिछले कई दिनों से एक आदमी का अगर नाम लेते कहते नहीं ये नहीं चलेगा। अगर कोई और मुद्दा उठाया जाता है तो जो हमारे धनखड़ जी हमारे सभापति राज्यसभा के हर चीज में ऑथेंटिसिटी मांगते हैं, ऑथेंटिसिटी मांगते हैं। और तमाम तरह की आज मणिपुर चल रहा है, उनको ऑथेंटिसिटी नहीं नजर आ रही है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। तमाम तरह की बेरोजगारी फैल रही है, उसके ऊपर उनको ऑथेंटिसिटी नजर नहीं आ रही है। तो ये जब इस तरीके की हरकत होने लगती है तो देश के अवाम को आगे आना ही पड़ता है। आज आप शांति के लिए आए हैं, कल एक ऐसा मौका होगा कि तमाम इंडिया ब्लॉक को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, इस सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तभी देश के अंदर शांति होगी, तभी मणिपुर में शांति होगी। ये संकल्प भी आपको करना होगा। आज आप यहाँ आवाज उठा रहे हैं कि मणिपुर में शांति हो, इसे तो देखिए कि साथ साथ देश के अंदर भी अशांति फैलाने का काम कर रही है ये सरकार। तो आज यह इंडिया ब्लॉक ने जो अपनी बात को यहाँ रखा है, मैं रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की अपने सॉलिडरिटी व्यक्त करता हूँ मणिपुर के साथ और अपने बात यही समाप्त करता हूँ क्योंकि फ्यू वर्ड्स बोल लेते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। Friends, I'm here to share your anguish, your pain. I'm here to offer an apology, and I'm here to join you all in making an appeal. I was in Manipur, and traveling in, anyone who has traveled in Manipur cannot ever forget that this is the land that held the first democratic elections in the history of India. The first universal adult franchise-based elections were held first in Manipur, then in the rest of the country, much later. This is the land which has had a chief minister, Rishan Keshingji, who was from a minority, perhaps one of the longest serving chief ministers from a minority community in any state in India. This is a land that has offered so many icons in sports, in culture to this country. When I went to Manipur last year as a part of the Bharat Jodo Nyaya Yatra, I simply cannot forget those scenes. It was evening, we were driving through Imphal, hundreds of women were holding torches. I saw anguish in their eyes. I also saw some hope. Angopi was the place, Chiang Mai. Hundreds of women holding those torches. Sir, I cannot forget it. There was so much anguish and also a glimmer of hope in their eyes. Next day, we were in Churchandpur. For the
rest of my life cannot forget the fear, the pain, the anguish, and yet a possibility of hope that I saw among thousands of people there as well. Having witnessed that pain on both sides, at least I, as an Indian, cannot take sides. For me, every pain is a real pain. I'm here to share your anguish, sirs and my friends, that the Prime Minister of this country has not found half a day to visit Manipur. He has in the meanwhile covered, I think, about 19 countries he has visited so far, ever since the strife began in Manipur. But he found no time to visit Manipur. A few days ago, I was with someone in the BJP. I rarely meet people from the BJP, but I happened to meet one person. I asked him just one question. I know we disagree on everything, but tell me, why has the Prime Minister not gone to Manipur? Other things we will disagree, doesn't matter. Just answer this one question. He said, पता नहीं क्यों personal ego का सवाल बना लिया है उन्होंने. This was exactly the answer from someone from BJP. Personal ego? About 60,000 people who are made to live outside their homes for months and months. Personal ego about a civil war that is taking place in this country. I cannot think of any other part of this country where you would have this kind of a war and the government would not have intervened. In Haryana in 2016, sir, we had a problem for 4 days. There was arson, rioting and so on. Within 4 days, the entire media of this country was focused on Haryana. The government had, the army was being sent, everything was settled after the 5th day. It simply cannot happen. The one thing I remember speaking to both sides in Manipur, everyone said, if Delhi wanted, it could have been controlled in 48 hours. Clearly, they do not want it. I share your pain. I share your anguish. I'm also here to apologize. Apologize because this country is not just the government of this country. Yes, there is government. Yes, there is central government. Yes, there is state government. But finally, the custodian of the Constitution is us, we the people. And I must say, with deep pain and deep sense of shame, that we, the people outside Manipur, who had the first duty to intervene, who had the first duty to say, Manipur's pain is my pain, Manipur's tragedy is my tragedy. Yes, some of us have said it. My friend Shashi Tharoor has just said it, Kanhaiya Kumar Bhai has just said it. But on the whole, this country has failed. We have failed to make the pain and the tragedy of Manipur as if it was our own pain, our own tragedy. And for this, I can only offer an unconditional apology. I really feel very ashamed of it. When I see those images coming from Manipur and us sitting comfortably in Delhi, something is seriously wrong with us as a nation, as a country. That all of us who come here for Jantar Mantar, all of us who protest for all kinds of things, all of us who march and do various things in this country, we could have done much, much more than we have done. And with folded hands, I offer unconditional apology to my friends, my co-citizen in Manipur, that the rest of the country has not really lived up to what it should have done. All I can say is, my friends, this is not what Indian nationalism is about.
Indian nationalism is not about one country, one language, one race, one religion, one culture. No. This is Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravid, Utkal, Banga. Everything has a place. Manipur is the money of India, and without Manipur, India is incomplete. This is the vision of India that we inherited. I'm sorry we've let it down, but this is not our nationalism. And these people occupying positions of power in Delhi do not represent India. India is much more than that, and I hope and sincerely believe that we can demonstrate in coming years and days that India is much more than what the government of this country says. And finally, I'm here to appeal to everyone. Let the government do what it does. Let the government not do what it is not doing, because I really have no hope from this government anymore, given the way it has demonstrated complete indifference, not just indifference, it's complicity in promoting violence. They want it. I don't have much expectations from this government, but everyone else can come together. The one thing that we must not do is to take sides. Even in saying this one has suffered more pain than the other, even that should not be done. It is a tragedy that affects everyone. It cannot be put on a weighing scale, more or less. No, everyone has suffered. I say this because some of my friends in moments of enthusiasm begin to do this weighing of this. This one has suffered more, this one has caused more pain to the other, etc. No, we don't need to do that. In the last few months, every time there is some thawing of relationship, something happens to again put the things on a reverse gear. Again and again this is happening. I just want to underline the fact, when I speak to my friends in Manipur, and there are many, not just my friend Bimal, who I have known before he became a politician, we worked together in an office, in an institution. And Bimal, I must say to you directly, I'm so proud of the speech that you made at midnight. This is one of the historic speeches that would be remembered in this country for what it said about the relationship between the Northeast and the rest of this country. You know, when I speak to my friends in Manipur, they say relationships are thawing, they are coming closer. But they say, I don't know what happens the moment we start coming closer, something happens to break it once again. Something is at work, we don't know what. We have to identify that. We, all of us, have to take responsibility. If the government fails us, we cannot fail our own country. We have to come together. And with that appeal, and with the assurance, on behalf of the Bharat Jodo Abhiyan, which is a confluence of people's movements all over the country, my colleagues are working in Manipur, in different parts of Manipur, coming from outside Manipur to work within Manipur. So on behalf of all those movements, and I see many movement friends of mine sitting here as well, on behalf of all of them, I offer you unconditional apology and an unconditional offer of support for this activity of creating a thaw and hopefully creating peace. Thank you very much. Friends, I have a regular visitor of Jantar Mantar, but today I have found so many personalities, so many media, electronic media and others. First time. And you know, this is not a world of bullock carts, it is a world of internet. And within seconds, it will reach the whole world. I could see today that so many parties, leaders have come together on a stage to support Manipur. And I tell you, my friends, please note down
one day whole world will support. If the violence is not stopped immediately, whole world will support. This is my prediction, and my predictions are never wrong. Today I have heard so many friends, they are so much supporting. Friends, Manipur should be the national capital of India. The culture in Manipur, there is nowhere in the world I can give you written. I have visited whole world. My itinerary is not less than Honorable Prime Minister Narendra Modi. I think I have traveled much more than him, and I did not find any such culture all over the world which the people of Manipur, highly cultured of Manipur, have. I have no words to express. Rather, India should learn the culture from Manipur. They are highly cultured people. I have traveled each nook and corner of Manipur more than a local man, and I have seen that such culture is nowhere in the world. All of you, you love your mothers very much, because mother ऐसी माँ है, सब कुछ दुनिया में मिल जाएगा, आपको माँ नहीं मिलेगी. You all love your mothers, and in Manipur, our mothers for the last so many months are on the roads shouting, their throat have dried up, and nobody is listening. It surprises me, please don't mind. I could see so many VVIPs here. क्या आपके पास, किसी एक के पास भी इतनी शक्ति नहीं है जो आप प्राइम मिनिस्टर के पास जाके मणिपुर का हिस्सा, मणिपुर का किस्सा बता सकें? It surprises me. I'm a nobody. I'm a very small fry. मगर मेरे पास थोड़ी भी पावर होती ना, मैं उसके पाँव में जाके उसको मना के आना था कि चलो मेरे साथ मणिपुर चलो और मणिपुर की दुख देखो. इतना दुख nowhere in the world. अभी इंडिया में ना अवार्ड मिलते हैं ना, पद्म श्री अवार्ड, ये अवार्ड. एक दिन टॉलरेंस अवार्ड अगर तो किसी को मिलेगा, द हाईएस्ट टॉलरेंस अवार्ड विल बी फ्रॉम द पीपल ऑफ मणिपुर. इतना टॉलरेट कर रहे हैं वो, आप सब जानते हैं. आप सब ने अभी भी बताया ये है वो है, ये आप सब जानते हैं. इतना टॉलरेंस कोई जगह में नहीं हुआ. माय फ्रेंड्स, आपके हाथ में ये मोबाइल है ना, मोबाइल, इसमें इंटरनेट है ना. आपको एक दिन के लिए इंटरनेट आपका बंद कर देने से हाउ वुड यू फील? आप अपने दिल से पूछ के बोलिए, एक दिन के लिए इंटरनेट आपका बैन कर दें, हाउ वुड यू फील? आई वॉज इन इम्फाल. मैं कल शाम को आया हूँ, मैं नाइट फ्लाइट से आया हूँ. 3 दिन तक आई कुड नॉट सी एनी मैसेज व्हाइल आई वॉज इन इम्फाल. जब मेरी फ्लाइट इम्फाल से गुवाहाटी पहुँची, टक 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 हंड्रेड्स ऑफ इम्पोर्टेंट मैसेजेस, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट भी थे, आई कुड सी. सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ आवर पीपल, our innocent people, our highly cultured people, our God-fearing people. They are suffering. We have so many intellectuals amongst us, बेचारे इंटरनेट के वजह से कुछ नहीं कर पाते. स्टडीज़, कितना कुछ, मेरे को बोलने के लिए बहुत कुछ है. आज मेरा दिल भरा हुआ है. इतना दुख nowhere in the world. अभी बता रहे थे 60,000, 70,000 डिस्प्लेस पर्सन. अरे उनके बारे सोचिए ना, जिनके घर जल गए हैं, वो कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं. ये भी जो हमारे जल्दी करवा दें, या मेरे को बताया गया जल्दी करो, ठीक है. जस्ट टेक जस्ट 1 मिनट. आप कभी अपने दिल में सोच के, दिल में फील करिएगा हाउ आवर पीपल आर लिविंग इन मणिपुर. जब से मर्ज हुआ, दे आर सिटीजन ऑफ द कंट्री. So they should have the same right which other citizens have. So thank you very much for giving me opportunity for even few minutes. मगर कभी मौका लगा ना, मैं अपना दिल आपको दिखाऊंगा. मेरा दिल रोता है. Recently we had so many festivals in Manipur. लोग in Delhi, कितने लोग खुश रहे हैं, वो लोग रो रहे हैं. उनके आंसू सूख नहीं रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं. So with these friends,
with these few words, thank you very much, and highly grateful that I am given chance to speak few words. Thank you very much. God bless you all. I'm so happy that all the national leaders, almost all the MPs of the India Alliance came here and supported our sit-in demonstrations, and also all these leaders of the India Alliance who have come and supported our sit-in demonstrations. And in fact, all these leaders of the youth and the NSUI and all these alliance cells of all the India bloc, I'm really happy that the people of India, the leaders of India supported and showed the support to the issues, to the unprecedented turmoil situation over there in Manipur. And also I'm really happy that the MPs of across the nations, starting from Tamil Nadu, Kerala, and Maharashtra, Assam, Meghalaya, Nagaland, and from other states of India supported to this sit-in demonstrations here in Jantar Mantar, and friends of media also supported to our sit-in demonstration here in Jantar Mantar. So friends, why we are coming here in Delhi is that we are raising our issues at the national level, because the peoples of Manipur suffering, it has been completed 18 months and it is going to be 19 months. The peoples are suffering, the people of Manipur are suffering in all forms of activities in our life. And really, it is a very shocking, it's a very horrific tragedy we have experiencing since 3rd of May 2023, and still this turmoil situation is continue. And for this we are coming here, we are moving towards Delhi from Manipur to raise up these issues at the national levels. And at the same time, the India bloc team, we really happy that the leaders of India raising these issues, raising our issues inside the parliament and outside the parliament. So for this, really thankful to all these MP who have raised our voice in the parliament. And so, and shortly, really, we are very painful. The people of, the entire people of Manipur are very painful. And we, in fact, the human rights of the people of Manipur is entirely violated over here. And the women are killed, and children, babies are killed. Our innocent citizens of India are killed here in Manipur under these administrations of the double engine government there. So this is the system that we are experiencing, facing the problem of this anarchy government. Really, what happened is that the national highways that we have, that is totally blocked since 3rd of May 2023 and still continue. The essential commodities that we have, this unavailable and it is not getting enough. And those whatever we get, it is also at a very high prices. And also, you see, the internet has been banned and it still continue. Curfew imposed day by day, and it is immediately the state government is imposing the curfew now and then, and the re-imposition of the armed forces special power right there,
And also, we are very thankful with these activities of the government under this double-engine government. So, a lot of disturbances to all the institutions, colleges, schools, universities, and the professional institutions that whatever we have here in the state. This is very horrific situations here who are facing there in Manipur. So, and we are really grateful to all the leaders of the India Alliance. So they have raised issues at the national level, and they are very much concerned about our issue at the national level. They have exposed whatever that we are facing here in the state. So I will just come to the point that this India bloc team Manipur moving some resolution to have a demand to the Modi's government, that I will just some few points I will move to resolve our demands to the government. So before that, before this moving this resolution, I'm just today's update. I'm just mentioning about this the Supreme Court's instruction to the state government. It's a very new, and today I just found that in the social media that Supreme Court seeks a shield cover report on the present unprecedented turmoil happening there, say like the burning of the houses, the injuries that happen, the killings of the peoples, the IDPs, whoever they are in Manipur. More than 60,000 IDPs are there in this relief camp. Still this continues, and hundreds of people were killed. On that matter, Supreme Court had served this shield cover report to the government of Manipur. So in this connections, I just want to say is that the state government would not do anything, because already the Supreme Court, Honorable Supreme Court has said and given the instruction that the entire law and order situation over there is totally breakdown. That's what's given by the Honorable Supreme Court. But that is nothing happened, nothing response was given by the state government. It's still today's update by the Supreme Court, which is mentioned here to submit the report with shield cover. That would not happen, nothing development at all, because this state government, they are in the state. This is the BJP government is totally protected by the Amit Shah ji. That is why nothing will be development at all, and that report may not be submitted or may not be done, whatever it is, but it is totally paralyzed over here. No administration at all, no protection of life in the properties over there. That is very painful there we are facing there. So I will now move the resolution of this sit-in, this protest, sit-in demonstrations done by our India bloc, India Alliance. So in this connection, I will just read it out. The move. India bloc Manipur resolves to fresh for the following demands to the Presidents of India and the Prime Ministers of India. Number one, Prime Minister, Honorable Prime Minister should urgently visit Manipur for an immediate restoration of peace and normalcy in the state without affecting territorial integrity of the Manipur. Number two, Honorable Prime Ministers of India should be held responsible for the ongoing turmoil in Manipur and continuous violence for 19 months in the state. Number three, Honorable Union Home Ministers of India should immediately resign on moral grounds for his failure to tackle the present violence in Manipur for the last 19 months over there in Manipur. Number four, Honorable Chief Ministers of Manipur should be immediately checked for allowing Manipur to keep burning for the last 19 months there in Manipur. Further, until peace and normalcy is restored in Manipur, India bloc, India Alliance Manipur will continue the democratic struggle to bring peace and normalcy in the state. We solemnly
declared that we will work together hand in hand, irrespective of caste, creed, community, ethnicity, to strengthen the bond of love and unity and integrity of Manipur for peaceful coexistence without enmity and hatred. Thank you. Jai Hind, Jai Manipur. Let us have a voice. Let us have a slogan at the end. Let's please stand up all and let us make the slogan. So you please second. Second. You second. You do the second. I, on behalf of the India Bloc Manipur, support this resolution, and please join us in the slogans to strengthen our movement. I will say peace for kindly say Manipur. Peace for Manipur. Peace for Manipur. Peace for Manipur. Peace for Manipur. Next, I will request all of you to say. I will say PM Saab. You will reply Manipur Chalo. PM Saab. Manipur Chalo. PM Saab. Manipur Chalo. PM Saab. Manipur Chalo. PM Saab. Manipur Chalo. Thank you so much. Thank you. Thank you.